So this is the our part of the question number 21 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic basic computer organization. So in this particular question you need to tell why RAM is called as a volatile memory. तो बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है रैम को, क्योंकि रैम क्या करता है, जब भी आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होती है वो क्या कर देता है, अपना कंटेंट को लूज कर देता है। तो रैम को इसलिए वोलेटाइल कंसिडर किया जाता है क्योंकि रैम को क्या चाहिए, आपको कंटिन्यूसली पावर चाहिए टू मेंटेन इट्स स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपकी पावर ऑफ कंप्यूटर की टर्न ऑफ हो जाता है या शट डाउन हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो डाटा स्टोर है आपका रैम के अंदर वो सारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसमें डाटा आपका कभी लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.